Hi guys, welcome to Box Office India. This is Anita. Today's guest is very special. People are just talking about him currently. He is the hot topic right now, and it's none other than Abhishek Banerjee. He is with us, and I am just going to add it. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Okay, so last time when I met you was during Stree, and now, after Stree, I am meeting you like this. This is for the first time. So how you been doing? Yeah, same old. I think everybody's like going through the same thing, washing utensils and cooking food and cleaning the house. पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वही सब चल रहा है. बीच में of course like show release हो गया, so there's a lot of change in the daily activities. You're spending a lot of time online. You're spending time with your fans. Yes. Yes, but you are on a roll, yeah. हमें एक के बाद एक अच्छे shows दे रहे हो आप, and we are actually very excited. So how excited are you? My pup is also excited. Yeah. Sorry, you'll hear him. No, my cat is like quiet right now. और वैसे ही मुझे कुत्तों से प्यार. Yes. Right. I think क्या कहते हैं, बड़ा अलग सा ही स्पिरिट है मतलब. So I was saying, how excited are you with back-to-back shows coming out? I didn't plan for it. I had no clue कि ऐसा कुछ होने वाला है, but it's happened and suddenly there's a lot of action and conversations and people. So the first 1 month जो एक quiet टाइम जा रहा था, वो एकदम अभी शांति नहीं. अभी पूरा मतलब चारों तरफ से जो है बहुत सारे लोग हैं जिनसे तो ये एक्साइटमेंट और बढ़ रही है because I know that Kali 2 is releasing now on 29. So that is also releasing. वो भी काफी टाइम से पेंडिंग था. And yeah, and I'm happy that the next उसके बाद Kali 2 के बाद जो भी आ रहा है वो सारा कॉमेडी. Oh, okay. Helmet is comedy and then आप कुछ और भी comedy. How different Hathoda Tyagi's character to the character that you're playing in Kali? Hathoda doesn't speak a word. He is a man of less words and he's not interested in talking to people. And Jin Liang, जो character है Kali 2, he is completely कहानियाँ सुनाने वाला. So he's always there like that. He's a storyteller. So you will see him like talking Aliya. जिन जिनको प्रॉब्लम थी हथौड़ा के ना बोलने से, उनको Jin Liang के बारे में बोलने से जो है प्रॉब्लम हो सकती. But what is more difficult, acting without dialogues or acting and dialogue both together? Of course, acting without dialogue is it is difficult because एक तरह से जो सबसे बड़ा weapon होता है actor के पास, dialogue, line, अपनी कहानी सुनने के लिए, वो छीन ली गई है. तो उसके छीनने के बाद जो है अब आप जो है अपने ऊपर है. अब आपका पूरा जो प्रैक्टिस है, जो भी काम आपने किया है कैरेक्टर पे, वो अब जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लगता है. So whatever you have thought about the character, whatever you have built, that starts playing an important role. So that is why I think it's more difficult and it's more how do I put it? Like it takes time. It takes time to get into a character like that. Right. But were you expecting this kind of response to the show? Because I enjoyed it. It was a binge watch. Started, ended, एक time. So were you expecting this kind of response? Not at all. None of us, how do I put it? Expected this or anticipated this. We all knew that we were trying to create something honest, and there was always this thing. ये honesty जो है वो लोगों को पसंद नहीं है, और आ रही है तो मतलब मजा आ रहा है. Right. But आपको लगा कि आप ये रोल कर पाओगे because आपको हमेशा हमने like ड्रीम गर्ल हो, स्त्री हो, एकदम कॉमेडी कॉमिक करते हुए देखा है. But when you did that kind of a role, it was actually something that we were surprised. It was a surprise package and all. I know, but मैंने क्या बोलते हैं अज्जी की है जो Netflix पे है और वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कैरेक्टर है. तो it was not very difficult for me to get to this space. In fact, I think मुझे कभी ये नहीं लगा था कि मुझे कॉमेडी में काम मिलेगा. That was very surprising for me that I was getting comedy. वही like I think कॉमेडी मैंने कभी सोचा नहीं था. But I didn't realize मुझे स्त्री के बाद फिर ड्रीम गर्ल भी मिल जाएगी, फिर ये भी मिल जाएगा. So I didn't expect that to happen. Because I was more
be doing intense roles or I'll be doing some, you know, serious roles, and वो होता है, मतलब as a young actor you always want to do that. And yeah, like all my life I've wanted to work with Anurag Sharma, Anurag Kashyap. So that's the kind of movies you watch and grow up, and Vishal Mehrotra, and that's the kind of thing you want to do. I never expected the comedy. So now I'm happy कि पहले कॉमेडी कर लिया फिर ये कर लिया, तो एटलीस्ट दोनों में थोड़ा बैलेंस बना रहा है। हाँ, होता तो कॉमेडी नहीं कर सकता, ये करके कॉमेडी में बहुत मुश्किल है। correct. But do you think even now people typecast easily करते हैं? If you do couple of same kind of roles, so then you get typecast quite quickly. बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल टाइपकास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और जो भी काम आपका सक्सेसफुल होता है, जो पॉपुलर होता है, उसी को लेकर फिर आपको लोग जो है किरदार जो है वही मिलते रहते हैं। और आई होप कि ना हो, आई होप एक्टर्स को मौका मिले हर कोई का काम करने का। लाइक जयदीप अहलावत अगर हाथीराम प्ले कर रहे हैं तो उसके पहले उन्होंने नेगेटिव हमेशा सीरियस रोल्स किए हैं, इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एकदम उल्टे हैं, एकदम खुद दबे हुए हैं। यही मजेदार चीज है एक्टिंग। Right. तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? Which role do you prefer? Comic or a little bit serious? I love characters like Hathoda Tyagi and Chiniya. I love it. You know, it just gives you a different feel and very high, because in real life you're never going to pick a gun, right? In real life you're not going to pick a hammer. तो जब वो वर्चुअल लाइफ में वो जीने को मिलता है तो थोड़ा सा एक मजा आता है, लाइक यू नो फील दैट वो क्या बोलते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए ही सही लेकिन वो पावर भी मिलता है। It's good. Right. So do we expect a part 2 of this season 2? Yes, that's what they're saying. They're saying that there's going to be a part 2, and they're going to write the part 2 story now very soon. और प्रोड्यूसर लिख ही रहे हैं, तो वो अलग बात है कि मेरा है नहीं है मुझे नहीं पता, मेरे को हाँ, but ला सकते हैं आपको वापस, you never know. देखते हैं। Right. You were also talking about a couple of movies that you have post this, the comic thing. Can you talk about that? Yeah, Helmet is one which has been produced by Dino Moria and Sony Pictures. We all are ensemble cast, and it's a good story. Not ही मतलब funny कहानी, और अलग से story है, लेकिन produced by Dinesh Shukla, who you know, who made Oh My God and not on to the everyone is coming, travel, Sharmin Joshi. Together, all of us like, you know, had a lot of fun in that show. Right. Right. You know, a lot of people don't know you're also a casting director. Yes. So how are you right now working through it? बहुत ही कम काम है, तो उसी में से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और सेल्फ टेस्ट, जैसे हम लोग अभी लाइव में ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे ही लाइव में जो है एक्टर सबसे बात करते हैं और अपना खुद का शूट करके वो देखते हैं। तो it's just that, there's no one-on-one communication nowadays. Right. You know, we did a poll recently where we asked a lot of all the people, all the Twitterati, what do you think when the theaters will open? Will you be okay going to the theaters and watching the film once again like we used to do COVID? And mostly, you know, a lot of people said no because they are scared. What do you think? How are we going to bring back the audience to the theater? As a artist, I'm asking you this question. I think it completely depends on them. I think it completely depends on every individual. We have to take care of ourselves, and everything can wait. And we need to be healthy and safe. So as long as we उनकी मर्जी है, completely their and everywhere they have to come out with ideas and ways so that अगर जरूरत पड़े तो social distancing में ही लोग चीजें देखते हैं. So let's see where it goes. Right. So we'll take few fan questions because everyone is messaging you. Yes. And everyone is talking about your Hathoda Tyagi role. Yes. So, what is the best compliment did you receive for the show? Indian Thor. Oh, Indian Thor. Oh, okay. Sweetest compliment. Excited for Kali, sir. Yes, even I'm excited. देखते हैं कि कैसा लगता है आपको. अलग कैरेक्टर. तो आपको ये दोनों रोल बैक टू बैक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि आपको बीच में कुछ कॉमिक की पार्ट लाना है और पीपल विल
वही तो बोल रहा हूँ कि अभी ठीक है ना, मतलब अभी इसको एंजॉय करता हूँ, 1-2 महीने बाद जब वो कॉमेडी फिल्म आ जाएंगे तो शायद उसको एंजॉय करने लगूंगा। तो मुझे मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है, तो नो कंप्लेंट, एज सिंपल एज दैट। So I think as Right. long as we all are having fun, we are working to entertain, and that's the whole point. So if I can entertain people, if I can do justice to whatever parts I'm getting, I'm not going to think about whether it's comedy, serious, रोना धोना, जो भी इमोशन हो, मेरा काम है करना, तो मैं करता हूँ। So what are you watching currently? Binge watching? Anything that you're watching? I'm watching a lot of documentary right now. I'm watching Last Dance, the documentary Okay. on basketball team. I'm watching that. Mm-hmm. Tiger King देख रहा हूँ, again एक documentary. मैं बहुत सारे documentaries देख रहा हूँ. I'm not watching fiction films. Oh. पर अगर आप ऐसे शोज देखते तो आपको कैसे पसंद है? थ्रिलर पसंद है, कॉमेडी पसंद है, या मुझे थ्रिलर शोज पसंद है। मैं कॉमेडी बहुत ही कम देखता हूँ, मुझे एंगेज करने में ज्यादा मजा आता है। जब कोई शो देखता हूँ तो मुझे एंगेज करना है। कॉमेडी में क्या है, वो तो टाइम पास के लिए देखना होता है, या जस्ट वाचिंग इट टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन। तो फिल्मों में ज्यादा मजा आता है, 2 घंटा देखा, हंसे खत्म हो। अब 9 अभी बहुत सारे कम कॉमेडी सीरीज है, अगर आप देखो तो कॉमेडी सीरीज ज्यादा है ही नहीं, नया कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि एंगेजिंग वही होता है, एंगेजिंग थ्रिलर ही होता है, एंगेजिंग ड्रामा ही होता है। राइट। तो अभिषेक जी, आपके हिसाब से which film was a turning point for your career? स्त्री। Yeah. Stree was the turning point. Yeah, completely. Stree completely changed the way people saw me, the way they started loving me, and the way it gave me confidence that I can do something. I can actually be a good actor. Try to be a good actor. So it was definitely. Yeah. So Stree 2 is also announced, and we are hoping. What do you think? I don't know. There are talks, वो speculation कभी कभार होती है, but अभी तक मुझे तो ऐसी कोई information आई नहीं. I really hope कि जल्दी से जल्दी बनाए, because I really want to play Jamin again, and let's see when that happens. Right. I mean, how was it working on Kali set? How different was it, especially on Kali set? I think it was very unique because I was shooting in Calcutta for the first time, and we had to shoot a lot, and बहुत कम time में बहुत काम किया, तो सबने बड़ी मेहनत से काम किया. That was the most important. And the most different part of Kali is that we had to say lines in Bengali, and then we have to say the same lines in Hindi. You have to maintain that balance between Bengali and Hindi. And that was the main thing. कैसे maintain कर रहे हो कि बंगाली में जो बात कर रहा है वही जो difference of Bengali जो lines बोल रहा हूँ और जो हिंदी में जो lines बोल रहा हूँ. Basically that am I audible? Yes. So basically speaking the same line in Bengali and the same line in Hindi and performing the same part, that was the most difficult part. क्योंकि हिंदी में लाइन अलग तरीके से बोलता है आदमी, उसका अलग तरीका होता है, बंगाली में बोलने का अलग तरीका होता है, तो जो डिफरेंट तरीके हैं उसको मतलब मेंटेन करना बड़ा इंटरेस्टिंग. So let's see कैसा निकलता है, लोगों को कैसा लगता है. This is for the first time you're doing it in Bengali, right? You're not. Yeah, I've never done anything in Bengali. Okay. Someone has asked who's the most honest person in the industry apart from you? Personally, मतलब one of the most cleanest human beings I have met and most brutally honest is Farah Khan. I think she's amazing. She's amazing. And whenever I've spoken to her, she's very out there. बिना किसी filter के बात करती है. I think she's one of the most honest and brutally honest human beings in the world. Right. And who is your dream? What is your dream role that you want to play? Do you have any dream role as such? I want to play a cop very soon. I don't know whether I look like a cop now or I look like a cop later, but I definitely want to play a cop. That's my dream. So let's see when I get to play that. Okay. And anyone that you want to work with, which is in your wish list? Any actor that you want to work with? I have like a huge wish list from Anurag Kashyap to Vishal Bhardwaj to Sujit Sarkar and Sriram Raghavan. I really want to work with all these filmmakers because I've grown up watching their films. So Zoya Akhtar, I'm not going to forget her name, but
all these are directors जिनको बचपन से देखते हुए आप बड़े हुए हो और उनके काम को देखते हुए बड़े हुए हो। तो वो एक Right. लालच रहती है कि somebody who you liked and who you were a fan of, you want to be a part of their own story. So, but I'm sure कभी ना कभी हो जाएगा, like if I continue to Right. evolve as an actor, because they are way ahead and they're way evolved as directors. So let's see, hopefully one day. Right. Somewhere I read you also look up to Rajnikant sir. Have you had the Of course, chance? I can never do that, but he's that childhood role model I had when I was a child and I was in Tamil Nadu. I started watching this film because all my Tamil friends used to watch Rajnikant films. And अगर आप बातें कहते हैं तो इसलिए मैं रजनीकांत सर की सारी फिल्में देखता था और बहुत सारी फिल्में देखता था। पढ़ाया अरुणाचल मेरे को तमिल तरियो मुझे उसको तमिलनाडु में मिला है तो मेरे को पूरा एकदम क्लियरली वो भाषा समझ में आती थी और लिखता भी था एक टाइम पे तो यार इतना ह्यूज Which is your favorite film of his? I think my favorite was maybe Padayappa. Padayappa is one of my favorite films which I saw. Okay. Both these films Arunachal and Padayappa. So anytime did you think of doing a South film? You're saying whether I wanted to do something like Tamil films or South Indian films? Yes. I'm a huge fan of Vijay Sethupathi. I'm a huge fan of Samantha Prabhu. I'm a huge fan of Fahad Fazil. They're amazing actors. Hanush. So I want to, be. I hope to act with them one day, and I'm sure as an actor I will learn the language. I will understand the language and I'll deliver it. Why not? If I'm doing Tamil also. Why not? Right. One of your fans are asking, do you like dogs in real life too? हाँ मतलब कौन प्यार नहीं करता जानवरों से मैं सबको प्यार करता हूँ और जो प्यार नहीं करते मतलब मैं सहानुभूति दूंगा उन लोगों को और ये बोलना चाहूँगा कि प्यार करना शुरू करो आई थिंक एनिमल्स एनी काइंड ऑफ एनिमल दे आर प्योर they are they are the natural beings on this planet we have made it so bad that now that we are in lockdown तो समझ सकते हो कि वो कितने अच्छे से रह रहे हैं बाहर देखो वो कितने रूल्स मेंटेन करके चलते हैं नेचर के हम लोग कितने नहीं करके चलते हैं सो एनिमल्स ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स लव देम love and they should equal love or more right next is your fan is asking how did you get into the industry please share your journey nothing very simple बॉम्बे आया बॉम्बे आके ऑडिशन देने की कोशिश की कहीं कुछ हुआ नहीं फिर एक बड़े आदमी के साथ जो है असिस्टेंट लगा जो गौतम कृष्ण चंदानी थे और असिस्टेंट लग के काम करता रहा और फिर जो है मैं सच बताऊं लोग जर्नी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम सब जो है सेम जर्नी को गुजरते हैं 20s में हर किसी के पास पैसे नहीं होते अगर ऑब्वियसली मैं 80% मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ जो इंडिया में रहते हैं मतलब जो है पैसे नहीं देंगे ऑब्वियसली तो सब लोग जो है सेम जर्नी से ही चलता है और बस एक चीज है कि I never lost my focus. I always knew that I have to do something and I always was ready to evolve. तो evolve नेचर की वजह से हमेशा कुछ नया करने की I think हमेशा चाहत रही. So that's why I could sustain this particular industry. And I was very happy with God. Whether I was casting, I'm happy with that. Whether I'm acting, I'm happy with that. अगर मैं जना कर रहा था तो मुझे उसमें बहुत मजा आ रहा था मैं हथौड़ी ड्राइव कर रहा था मुझे बहुत मजा आ रहा था मैं पहली 2 में दुनिया कर रहा था मुझे उसमें बहुत मजा so always have fun with whatever I have and I think that's it you have fun with whatever you do right but how are you balancing the casting director's role and the actor's role कभी ये दोनों clash हुए हैं बहुत पहले होते थे और मतलब कभी हो देखो वही डिपेंड करता है कि how good a professional I'm a professional human being मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी मैं काम से काम करता हूँ मेरा को मतलब मैं ना किसी के साथ ज्यादा कोई दोस्ती यारी में बिजनेस करनी है या मुझे लोग भी कर देते हैं उनको करना नहीं करना मैं काम से काम करता हूँ and that is what I do and so yeah when I'm casting I'm working as a casting director when I'm acting I'm working as an actor and both the jobs are कोई टेंशन या बाउंड्री कभी नहीं बट कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक कास्टिंग का ये आया है रिक्वायरमेंट आया है हाँ एंड
हाँ नहीं ऐसा लगे कि ये रोल मेरे को आई कैन डू बेटर। नहीं, सच बात बताऊं तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मैं कभी भी उनमें से किसी में भी ऐसा डेस्परेट रहा नहीं है कि मुझे ये रोल तो करना है। ऐसा कभी मैंने कोई ऐसा रोल पढ़ा नहीं जो मुझे देखकर लगा हो कि यार ये रोल तो मुझे करना ही करना है, वरना मेरे अंदर के वो रोल एक ही था जो राजकुमार गुप्ता की फिल्म थी गनचक्कर में जो इद्रिस का रोल मुझे करना था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मुझे नहीं मिला, मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन बस वो इतना था, एक ही फिल्म में वो एक ही कैरेक्टर था जो मुझे लगा था कि मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। स्त्री पढ़ के भी मुझे लगा था मैं जना कर सकता हूँ, मुझे लगा था मैं माता में पढ़ के मुझे लगा था मैं अंसारी कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को लगा मैं ऐसा कोई कर। तो ये हमेशा जो है मैं दूसरों पे छोड़ देता हूँ एज एन एक्टर, जो सामने वाले को मैं इतना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, you will either judge me or maybe you can and then whatever people give me, I'll do it. I'm not looking at like a career strategy, ये करना है वो करना है, हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई idea is to have fun. Three casting acting in one story, I'm contributing two ways. I'm not only acting, I'm also getting acting to do that, and they're सिर्फ सिंगल हैप्पीनेस नहीं है कि एक्टिंग अच्छी की, कास्टिंग भी अच्छी की है, वो भी मजा आ रहा है। तो और वही है दैट क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आर, यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू गेट एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विद इन यू। कितना राइट। तो ऐसे कभी हुआ है कि यू नो समवन हैज बीफ्रेंडेड यू जस्ट बिकॉज़ यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर? बहुत होता है, रोज होता है। और आप कैसे डील करते हो उसको, उससे? दोस्ती करके उसमें क्या है, like you know, if people are being friendly, I'll be friendly with them. But if they're expecting that I'll do favors, and if they're not good performers, then no, that's not going to happen. If you're a good performer, yes, I will do you favors, definitely. Yeah. If you're a good actor, I will find you a grave and get you. You don't need to be my friend. Okay. Lastly, I want to ask you, which is that one character of yours that is very close to your heart that you have played? Jana and Hathoda Tyagi. Yeah. Both. And both because they both are very, very pure. Very, very pure. Jana को बस कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और विशाल को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि उसको वो सारी चीजें करनी पड़ी जो उसको। They both have saved me. They both have made me better. They both have made me patient, calm, and more receptive towards things, and less complaining. जो हमारी complaining वाली life होती है वो थोड़ी कम होती है। मैं सब complain। Okay, great. Sure. Well, on that note, thank you so much for having a conversation with us. Looking forward to more such surprising, great characters from your end. Seriously, thank you so much. Do and tell me what you think of it. Yes, I will, for sure. Thank you so much for doing this. Thank you guys, all of you, for showing love. Thank you. See you. Thank you. Bye. So guys, that was Abhishek Banerjee with us. Hope you enjoyed our conversation. And if you missed this conversation, you can watch the conversation on our Box Office India YouTube channel. And if you have any requests at who you want to see live with, do let us know in the comment section, and we will try to get your request completed. Thank you so much for doing this, and bye.